सूरत के अडाजन इलाके में कानाडाई वीजा दलाने के नाम पर लोगों से 20.66 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों में से एक कल्पेश चौहान को अडाजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। कनाडा और यूके वीजा के नाम पर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। स्टूडेंट वीजा वर्क परमिट के नाम पर 8 से ज्यादा लोगों से ठगी की गई है। 20.66 लाख से अधिक लेकर वीजा ऑफिस के मैनेजर फरार। भावेश चौहान और कल्पेश चौहान ने अडाजन इलाके में एक ऑफिस खोला। अडाजन में कृपा एजेंसी के नाम से ऑफिस चलाया जाता था। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यालय वडोदरा में है। कामरे सिमाड़ा गांव के एक किसान ने अडाजन पुलिस थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि 8 से अधिक लोग पीड़ित थे। अडाजन पोलीस स्टेशનમાં ફરિયાદી પ્રકાશભાઈ એક ફરિયાદ આપી છે, જેની અંદર એમને કેનેડા અને જવાના વિઝા માટે બે જણાના વિઝા માટે એમને એપ્લાય કર્યું હતું અને એનામાં આ કામના આરોપીઓએ એના પાસેથી 20 લાખથી ઉપરની માતબર રકમ લઈ અને કેનેડાના વિઝા કરી આપીશું એવી એમને બાંહેધરી આપી હતી। ત્યારબાદ એ લોકોએ પૈસા આપ્યા, પરંતુ આ કામના આરોપીઓએ કોઈ જાતના વિઝા કરી આપેલ નથી, જેથી એ ભાઈએ અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલ છે અને જેની અંદર એક આરોપીને કલ્પેશ છે એનું નામ એને પકડી પાડેલ છે અને આગળની તપાસ ચાલે છે। હાલમાં આ વિઝા કૌભાંડ ક્યાં છે, શું છે, એ બધી ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે।